हेलो, नमस्कार, वेलकम। एक्सपायरी की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं सहज अग्रवाल, हेड ऑफ डेरिवेटिव रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज। आज आपसे ओवरऑल मार्केट का सेटअप कैसा है, पिछले हफ्ते में क्या हुआ, बहुत एलिवेटेड वोलेटिलिटी रही, आगे का सेटअप कैसा लग रहा है, और इन स्पेसिफिक एक्सपायरी रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट एज अ ट्रेडर आई थिंक लास्ट वीक की जो वोलेटिलिटी थी वो पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी थी। आपका इंडिया विक्स भी एक ही दिन में अप्रोक्सीमेटली 50% राइज हुआ। जिनको पता है इंडिया विक्स, जिनको नहीं पता, इनफैक्ट इंडिया विक्स ऐसा नंबर है जो वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और इनडायरेक्टली ऑप्शन प्राइसिंग को डिपेक्ट करता है। जितना इंडिया विक्स आपका हाई होगा उतना ऑप्शन की प्राइसिंग हाई होगी, क्योंकि उतना ही फियर फैक्टर और अनसर्टेनिटी लेवल मार्केट में हाई है। तो जो लास्ट वीक आपने एक एक्सपीरियंस किया था जहां पे इंडिया विक्स एक्सट्रीमली हाई था ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल वोलेटिलिटी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में काफी उथल पुथल हो रही थी, काफी सेलिंग प्रेशर था। सो दैट्स व्हाट इंडिया विक्स रिप्रेजेंट्स। आई थिंक पोजिशनली आप ये बोल सकते हैं कि एक एक मार्केट की चाल में थोड़ा सा बदलाव है, ऐसा हमारा ओपिनियन है। ऑब्वियसली देयर इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। थोड़ा सा आपको आई थिंक पार्टिसिपेशन में ओवरऑल सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है थोड़े टाइम के लिए। ब्रॉड बेस्ड जो रैली हम एक्सपीरियंस कर रहे थे जून जुलाई, आई थिंक वो फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होगा आपका। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्पेसिफिक, रोटेशन होने के चांसेस हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि इंडिया स्पेसिफिक यदि मैं पैरामीटर्स देखूं, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल, जहां पे हम इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, कंफर्ट और अर्निंग्स को देखते हैं, वो काफी हद तक कंफर्टेबल है। राइट, सो वोलेटिलिटी है और वोलेटिलिटी रह सकती है। मेरे हिसाब से दैट कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल मार्केट पैरामीटर्स। सो ओवर हियर वी हैव टू कीप अ क्लोज ट्रैक ऑन व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर श्योर। वहां के मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट डोमेस्टिकली I think that is the reason why we've not, we've kind of outperformed even in these times. जहाँ पे global markets में, the selling pressure has been to the extent of 5%, 10%. We are relatively better off as compared to those markets. So that's the broad view that we have. इस पे और भी हम चर्चा करेंगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सपायरी की बात की प्रेजेंटेशन के साथ। सो ये आज का दिन है आपका, जो आपको चार्ट राइट साइड पे दिख रहा है, काफी फ्लैट और सो टू से रेंज बाउंड एंड बोरिंग डे आप बोल सकते हैं। जहां पे आपने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद में ऊपर नीचे करके इवेंचुअली लास्ट के वन आवर में आपको थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा। निफ्टी, बैंक निफ्टी टेस्टिंग दी हाईज ऑफ द डे, बट ब्रॉडली यदि आप देखेंगे तो जो मॉर्निंग का हाई था और अगेन मॉर्निंग में ही अराउंड 11 o'clock जो आपने लो बनाया, वो रेंज के अंदर ही आप पूरे दिन में निफ्टी ने आज के दिन में ट्रेडिंग करी। आज का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा इंडेक्स मल्टीपल इंडाइसेस का यदि आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमको देखने को मिली है। जहां पे आपका मिड कैप इंडेक्स जो है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.86%, मिड कैप 100 इंडेक्स 2.45%, निफ्टी अराउंड 1.27%. So broadly today was a positive day after an opening, a positive opening, and consolidation all throughout sustained. So that is one good thing that we are seeing in the short term. यदि हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस outperformed massively with 3%, metal with 2.69%. So these were the top two performing sectors, and relative underperformance में you can say FMCG and bank, which performed with gains of 1.17% and 0.75%. But overall today was a good day. After the volatility that we witnessed in the previous few trading sessions, good day, sustained and closed at the highs of the day. दिन के ऊपर के स्तर के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, so that gives us some comfort for the expiry session for tomorrow for sure. मीडियम टर्म आउटलुक क्या है?
सो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं रुख में और मार्केट की चाल में थोड़ा सा बदलाव है। हमारे हिसाब से हमारी जो एनालिसिस सजेस्ट कर रही है वो ये बोल रही है कि मार्केट का एक मिनी बुल साइकिल, आप एक टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद में मार्केट ने ये वोलेटिलिटी के दरमियान कुछ लेवल्स तोड़े जिसने अभी हमें कंसोलिडेशन फेज में डाल दिया, राइट? सो आई यूजुअली हम आइदर वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द मार्केट और वी रिमेन नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई वी मेंशनड वी आर इन अ करेक्टिव फेज। करेक्शन कुड मीन प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन, आप टाइम वाइज भी कंसोलिडेट कर सकते हैं और दैट वुड आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटिंग टू अ करेक्टिव फेज ओनली, राइट? निफ्टी 50 रिमेन्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स, जैसे मैंने आपको बताया। नई चाल के लिए, नई बड़ी चाल जो एक पोजिशनल चाल है जहां पे हम 200-500 नहीं बट यू नो मल्टीपल परसेंटेज गेन की बात करेंगे, वो हमें लग रहा है निफ्टी में आएगा 25,350 के ऊपर। थोड़ा सा दूर है वो लेवल, इन पॉइंट वाइज आई थिंक इट्स 1000%, इन परसेंटेज वाइज आई थिंक अराउंड 4%, बट हमारे एनालिसिस के हिसाब से 25,350 यदि निकलता है, देन अगेन यू गेट इनटू अ mini bull cycle which can actually take you up further ahead. Again a repetition, macro parameters फिलहाल के लिए domestically comfortable है in terms of earnings, in terms of liquidity, but global front पे थोड़ी सी तकलीफ है या थोड़े से पैरामीटर्स इतने कंफर्टेबल नहीं है टेक्निकली, वो शायद सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका ये कंसोलिडेशन का फेज थोड़ा और लंबे दरमियान तक चल सकता है, right? So for positional traders, for trend traders, 25,350 in our opinion becomes a very critical level. So considering all these points, हमें लगता है कि अगले कुछ हफ्तों के लिए आपका अपसाइड लिमिटेड हो सकता है, राइट? डजंट मीन कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, यहाँ से हाँ आप 24,500, 24,600, 24,700 तक भी जा सकते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल आपको अपसाइड एक तो स्लो दिखेगा और थोड़ा सा लिमिटेड लगेगा, ऐसा हमारा एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है। जब तक ये ऊपर का लेवल 25,350 नहीं निकलता है, वी वुड नॉट सजेस्ट एक्सट्रीम एग्रेशन फॉर ट्रेंड ट्रेडर्स. For short-term traders, as it is, the rules remains the same irrespective of a trending market or a non-trending market. So that's the broader view that we have on the market. ये हमारा broad view है market पे. For getting a positional trigger, you need the resistance level of 25,350 to be crossed. सो अब एक्सपायरी स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर्स हम गो थ्रू करते हैं बिफोर फॉर्मिंग अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑन द मल्टीपल पैरामीटर्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग. सो पॉइंट नंबर 1, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप. आपके स्क्रीन के सामने कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कल की एक्सपायरी सेशन के लिए. 24,000 पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, 24,500 कॉल में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है. आज की क्लोजिंग आपकी 24,300 के आसपास हुई है. यदि आप 24,000 के बाद स्ट्राइक्स में बिल्डअप देखेंगे तो 24,100, 24,200 में भी बिल्डअप है. तो ओवरऑल ग्राफिकली आप ये देख सकते हैं कि पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है एज कंपेयर टू कॉल साइड, एंड द ब्रॉड रेंज दैट वी लुकिंग एट इज 24,000 पुट एंड 24,500 कॉल. आगे बढ़ते हुए इसमें आज काफी इंटरेस्टिंग पैरामीटर है जो बहुत दिनों बाद देखने को मिला है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, हाईलाइट करूंगा. आपके स्क्रीन पे जो नीचे में लास्ट ब्लैक एरो की है उस रो पे आप ध्यान दीजिए. आपको पुट में आज ओपन इंटरेस्ट 13,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, जबकि कॉल साइड में सिर्फ 87,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं. अप्रोक्सीमेट नंबर्स, प्रोविजनल डेटा है, फाइनल डेटा का क्योंकि आपका जो पब्लिश होता है वो लेट इवनिंग में होता है, सो वी यूजिंग द प्रोविजनल डेटा, बट ब्रॉडली द डायरेक्शन वुड बी सिमिलर ओनली. सो आज के दिन में पुट राइटिंग काफी एग्रेसिव हुई है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग, व्हिच अगेन सजेस्ट दैट फॉर द शॉर्ट टर्म traders are anticipating a positive bias to sustain in specific for the expiry session, and maybe going ahead also this sentiment could continue. But expiry specific aggressive put writing और स्ट्राइक्स हमने कौन से देखे जहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है. प्रीवियस स्ट्राइक्स का एक बार मैं दोबारा आपको रेफरेंस देता हूं तो इट विल बी मोर graphically clear to you. 24,000 put followed by 24,100 put followed by 24,200 put. So overall put writing काफी aggressive हुई है. यदि global markets आज flat भी रहते हैं और positive रहते हैं तो there's a high chance that put writers will land up benefiting from the theta decay होगा, पूरा प्रीमियम वो पॉकेट करेंगे और मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो इंटेंशन है वो सक्सेसफुल रहेगा. एज कंपेयर टू दैट, अगेन कमिंग बैक टू द ऑप्शन चेन, कॉल साइड में सिर्फ 87,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, व्हिच इज अ वेरी मिनिस्क्यूल नंबर.
टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं ये एक्सपायरी की सेशंस काफी टाइम से कर रहा हूँ, और इतना इतना एग्रेसिव नंबर आई कैन नॉट रिकलेक्ट मैंने लास्ट कब देखा था फॉर एन एक्सपायरी सेशन इन पर्टिकुलर. So I think the support on the market seems to be extremely strong. But again, these are parameters which are supportive to your setup, and things can change, in a very short period of time because of the global volatility. But if everything remains smooth in the global markets today, I think the support should work well, and the short-term parameters are suggesting a positive bias in the market. The next point that we would like to discuss is max pain plot. So max pain क्या है? Max pain वो नंबर है जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, जो ऑप्शन बेच के काम करते हैं, जो प्रीमियम ही उनका प्रॉफिट है, वहां पे वो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम उनका प्रॉफिट होगा बेसिस द ओपन इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस ऑफ द मार्केट टुडे. So at this point of time, the max pain number is at 24,300. Nifty has also closed around the 24,300 mark. तो 24,300 पे यदि मार्केट एक्सपायर होता है कल के दिन में, तो जो रेसिडुअल प्रीमियम है 580 करोड़ के आसपास का, वो पूरा गल के जीरो हो जाएगा, एंड दैट विल go in the pocket of the option sellers, option writers, right? And option buyers will make the maximum loss. उनको maximum loss on the outstanding positions होगा at this point, which is 24,300. So just to repeat, max pain वो point है जहाँ पे option writers make the maximum money on the expiry for a particular series and a contract, which currently is placed at 24,300. 24,300 पे वो point फिलहाल के लिए placed है. Again, another interesting parameter. I think this phase of the market is shooting a lot of interesting parameters on us, including market में जो global volatility हमने देखी, on a presenting a factual note, निकाय में जो movement आया आपका, that was a historic movement. In fact, यदि आप index देखेंगे तो उसका 42,500 का high था, and it made a low around 30,000, 31,000 approximately. So in a period of a month, आपको अराउंड 20-25% का करेक्शन वहां पे देखने को मिला है, which is pretty huge and significant, right? So just sharing a fact with you. Now, coming back to who's doing what, participant wise यदि आप activity देखेंगे, first of all we'll focus on index options, which is on the right side of your screen. DI, net short, FI, net short, pro, net short. So all these three participants, that is DI, FI and Pro, ने net short index options की position बना के रखी है. हम इसको net short कैसे गिनते हैं? Put buying is considered negative, call selling is considered negative, and similarly put selling is considered positive and call buying is considered positive. तो net इनका जो हम net off करके culminate करते हैं, तो वो हमें दिख रहा है कि DI, FI and Pro ने overall net short positions बना के रखी है. सामने client side is net long on the market with an historical high number of around 12,17,000 contracts. So this is again a huge and a historical number that, if I'm not mistaken, that we are witnessing in terms of the participant activity. Similarly, यदि index futures की बात करें, which is on the left hand side of your screen, overall activity is pretty muted and neutral. बहुत ज़्यादा bias, बहुत ज़्यादा strong positions, बहुत ज़्यादा leverage वहाँ पे दिख नहीं रहा है. Most of the activity is happening on the index options front, with FI, DI, Pro remaining net short and client side being net total positive on the long side. Yeah, so that's what who is doing what, किस हिसाब से participants ने अपने exposure फिलहाल के लिए बना के रखे, and most of this data would be relating to the upcoming expiry session for sure. So ये आपका निफ्टी का वीकली चार्ट है. Again, this depicts what happened on Monday, wherein we witnessed a gap down, and last week के जितने put writers थे, जो support provide कर रहे थे, they would have actually got into some kind of a trouble. In fact, on Friday, much before this correction happened, हमारा एक बहुत ही critical level of 24,850 ब्रेक किया था, जिसके बेसिस पे हमारा ये ध्यान था कि भाई now August series could actually witness some selling pressure and volatility could increase. Coincidentally, Monday volatility shot up in an historical manner and the market witnessed a significant correction, right? So अभी भी हमें ये लगता है कि August series could actually be non-directional and could witness consolidation and range-bound movement
basis the parameters that we look at and trade on to. Just for reference, ये आपके सामने पिछले हफ्ते और ये हफ्ते का अभी तक का निफ्टी का चार्ट है for gauging the kind of movements that the market has made. Now that we've considered इतने parameters, हमने इतने सारे parameters देख लिए हैं, let's go one by one, consolidate them and have an overall view on the market. Overall जैसे मैंने बताया कि जो structurally positive है, but we've taken a pause. So I think at this point of time, momentum could be a little missing. So that's why I say that we are in a trendless kind of a setup at this point of time and expecting some consolidation for few trading sessions in the broader range, and we are in a corrective phase as such. Volatility across global markets. Yes, we are witnessing extreme high volatility across global markets. Medium term perspective remains corrective, which is again a repetition of the trendless phase that we are in. Open interest build up, abhi humne discuss kiya, is at 24,000 put and 24,500 call. We have closed at 24,300 approximate numbers. Larger trend resistance is placed at 25,350, which is around 4% away from here. And index options के अंदर FI, DI and Pro continue to remain net short, right? So overall, यदि आप parameters देखेंगे तो trendless consolidation, participants broadly being net short is the overall structure that is coming out from the parameters that we've just discussed. So all in all, this is again today's इंट्राडे मूवमेंट. ये आज का इंट्राडे मूवमेंट है जहां पे आपका हाई बना था 24,340 का, लो बना था 24,180 का. हैविंग कंसीडर्ड द पैरामीटर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, मेरे हिसाब से जब तक ये दोनों लेवल्स के बियॉन्ड आवरली बेसिस पे मार्केट सस्टेन नहीं करता है, then there's a high chance that you would actually land up witnessing a range bound movement. In fact, today on our Telegram channel, we have recommended a range bound strategy, keeping this view in mind for tomorrow's expiry session. यदि 24,340 के ऊपर hourly basis पर sustain आता है, then that becomes an opportunity for you to get into a call option, an ATM call option with predefined risk as per the parameters that you work on. At that point of time, we would also intend to initiate a position basis the parameters and the market levels at that point of time. But broadly the principle is ATM call option with a predefined risk हम suggest करेंगे आपको यदि 24,340 के ऊपर hourly basis पर sustain करता है. Similarly on the downside 24,180 is a key support level, and वो यदि break करता है on hourly basis, then the upside for the day could become extremely limited and selling pressure could possibly emerge. But net looking at the parameters that we have, at least for the short term, चांस ये लग रहा है कि क्योंकि पुट राइटिंग ने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी है, ओवरऑल ट्रेंड और मोमेंटम आपका कंसोलिडेशन का है, रेंज बाउंड रहने की काफी ज्यादा उम्मीद है, विद एन ओपननेस कि यदि 24,340 के ऊपर सस्टेन करेगा ऑन आवरली बेसिस, देन मे बी वी कुड गेट इनटू अ इंट्राडे बाय कॉल ऑप्शन विद अ प्रीडिफाइंड रिस्क काइंड ऑफ ट्रेडिंग सेटअप. Yeah, so that's the overall view. ये हमारा व्यू है कल की एक्सपायरी सेशन के लिए. यदि एज अ ट्रेडर आपको एक लेवल का ध्यान रखना हो तो 24,180 का ध्यान रखिए, क्योंकि ये लेवल यदि ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका अपसाइड फुल लिमिटेड हो जाएगा एंड डाउनसाइड टुवर्ड्स 24,000 23,900 ओपन हो सकता है. तो द की लेवल इज 24,180 एंड मोमेंटम आपने को देखने को मिल सकता है 24,340 के ऊपर. Yeah, so that's the view that we have for the expiry session. कल के expiry के session के लिए this is the view that we have. हमने हमारे जो भी parameters हैं उनको objectively आपके सामने present किया है, keeping the broader view in the market, the change in the trend, the global markets. We discussed the India VIX rising significantly, which gives an opportunity for option writers to actually take advantage of the same. And yes, volatility is expected to remain high. Lastly, the key level is 24,180, 24,180 के लेवल का ध्यान रखिए. ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है. यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद. यदि आप हमें अभी तक नहीं फॉलो कर रहे हैं या पहली बार आपने हमको आज के सेशन के लिए ज्वाइन किया है, प्लीज हमारे चैनल पे ज्वाइन कीजिए और हमारे रिसर्च और रिसर्च रिलेटेड जो भी हम इवेंट्स करते हैं उनके अपडेट्स आपको वहां पे रेगुलर बेसिस पे मिल सकते हैं.
So that's it from my side. Thank you. Have a great day today and have a successful trading session tomorrow. Thank you so much. Signing off.